नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करके सिलिकॉन वैली बैंक के सवाल पर उठकर चले गए बाइडेन। जी हां, 40 लाख से ज्यादा बार देखा गया है ये वीडियो। स्पाई बैलून घटना पर भी यही किया था। सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस अमेरिकी सरकार के लिए परेशानी बनती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से सोमवार को इस क्राइसिस पर सवाल किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इतना ही नहीं, वो इवेंट से भी उठकर चले गए। पत्रकार ने बाइडेन से पूछा, आश्वस्त कर सकते हैं कि आगे ऐसी क्राइसिस नहीं होगी? राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में लचीली बैंकिंग व्यवस्था को बनाए रखने, ऐतिहासिक आर्थिक सुधार की रक्षा विषय पर बोल रहे थे। स्पीच खत्म होने के बाद रिपोर्टर ने राष्ट्रपति बाइडेन से पूछा था कि आप इस बारे में सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस में अभी क्या जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और क्या आप अमेरिकियों को आश्वस्त कर सकते हैं कि ऐसा आगे नहीं होगा? लेकिन जो बाइडेन इस सवाल का जवाब दिए बिना ही वहां से चले गए। पत्रकार को कहा था सन ऑफ बिच। पिछले साल जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लाइव माइक्रोफोन पर पत्रकार के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। तब व्हाइट हाउस फोटो सेशन के मौके पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फॉक्स न्यूज के पत्रकार को लाइव माइक्रोफोन पर सन ऑफ बिच कहा था। पत्रकार ने बाइडेन से पूछा था, देश में लगातार बढ़ रही महंगाई से मिड टर्म इलेक्शन में आपकी पार्टी का कितना नुकसान हुआ? इस पर बाइडेन ने कहा कि इससे नुकसान नहीं, फायदा होगा। और इसके बाद उन्होंने पत्रकार को स्टूपिड सन ऑफ बिच कहा था। सोमवार को ही प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा था कि देश के फाइनेंशियल सिस्टम्स सुरक्षित हैं। हम ये वादा करते हैं कि सिलिकॉन वैली बैंक के पतन होने वाले किसी भी नुकसान को टैक्स पेयर्स के ऊपर नहीं डाला जाएगा। मामले से जुड़े दो लोगों के मुताबिक बाइडेन प्रशासन अलास्का के पेट्रोलियम रिच नॉर्थ स्लॉप पर मेजर लो ऑयल प्रोजेक्ट को मंजूरी। HSBC ने सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदा। HSBC ने अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक की यूके यूनिट को खरीद लिया है। ये डील केवल 1 पाउंड यानी करीब 99 रुपए में हुई है। अधिग्रहण की कीमत केवल नाम के लिए है, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक के पूरे कर्ज को सरकार का बैकअप है, यानी HSBC को इस डील के बाद कोई लोन नहीं चुकाना होगा। Today, thanks to the quick action of my administration over the past few days, Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Small businesses across the country, the deposit accounts at these banks can breathe easier knowing they'll be able to pay their workers and pay their bills. And their hardworking employees can breathe easier as well. Last week, when we learned of the problems of the banks and the impact they could have on jobs of small businesses and banking system overall, I instructed my team to act quickly to protect these interests. They've done that. They've done that. On Friday, the government regulator in charge, the FDIC, took control of Silicon Valley Bank's assets. And over the weekend, it took control of Signature Bank's assets. Treasury Secretary Yellen and a team of banking regulators have taken action, immediate action. And here are the highlights. First, all customers who had deposits in these banks can rest assured they'll be protected and they'll have access to their money as of today. That includes small businesses across the country that bank there and need to make payroll, pay their bills, and stay open for business. No losses will be, and this is an important point, no losses will be borne by the taxpayers. Let me repeat that. No losses will be borne by the taxpayers. Instead, the money will come from the fees that banks pay into the deposit insurance fund. Because of the actions that our regulators have already taken, every American should feel confident that their deposits will be there if and when they need them. Second, the management of these banks will be fired. If the bank is taken over by FDIC, the people running the bank should not work there anymore. Third, investors in the banks will not be protected. They knowingly took a risk, and when the risk didn't pay off, investors lose their money. That's how capitalism works. And fourth, there are important questions of how these banks got into the circumstance in the first place. We must get the full accounting of what happened and why those responsible can be held accountable. In my administration, no one is above the law. And finally, we must reduce the risks of this happening again. During the Obama-Biden administration, we put in place tough requirements on banks like Silicon Valley Bank and Signature Bank, including the Dodd-Frank law to make sure that the crisis we saw in 2008 would not happen again. Unfortunately, the last administration